Kushal? Okay, let's go live. Yeah, yeah. Good. Yeah, the first start. Yeah, some background noise is coming from somebody's window. Just trying to get that. Okay, it's good to go. Yeah. Hot Talks. Welcome all the participants to this weekend program, which is called Hot Talks. Uh, as you know, on a weekday basis, we have what's called the most serious ones, which is the uh, business and banking dialogue. Hot Talks, we bring in entertainment, we bring in people who have done a lot of work during this COVID period, gone beyond the call of duty. And today's program is dedicated to very much the COVID warriors, as we call it. In our own words, in our own way, we are the COVID warrior. I mean, the team has recognized five people uh, who are the COVID warriors from EPS. So today's program is pretty much internal for the EPS staff, and it is recognizing that these were the people who have gone beyond the call of duty and have uh, try to do services which is good for the people, or try to do services which to keep the entire EPS functioning uh, as if everything is normal, and that required a lot of determination to do, the passion to work, and say that the passion to kind of yourself to get those kind of operations going. So today we have one, two, three, four, five of them, and five COVID warriors have been recognized by the management. So when a management recognizes these people, it means that you have actually been uh, recognized for the kind of work that you have been doing in this COVID period, and ensuring that things work um, as if it is a normal day. So let me invite first Mr. Srinath from Chennai. He will be first introduced by Vishal Krishna. So Vishal Krishna, can you please unmute yourself and introduce your colleague Srinath? Yeah. Hi, everyone. So I would like to introduce Srinath C, Hi. who is heading this two states, Tamil Nadu as well as Kerala. And in this lock-in period and this COVID period, so Srinath himself and his team has done the wonderful job by going on ground, visiting on ground, and there's lots of activities are there
like a migration and everything, and place like Kerala, and the people has we can say that the close coordination with the bank and the getting the cash on time, getting the migration done on time, and keeping the site hygienic. So I can say that yes, they own the responsibility, and done something which is something we can say that yes, it is exceptional. So please, I would like to welcome Srinath to say something about himself and his team performance. Thank you, Vishal, and thank you, KK sir. Yeah, this is actually I take care of both Kerala and Tamil Nadu. And Kerala, as everybody knows, is a very difficult terrain to handle, and also currently due to COVID is actually got reduced, and then it started increasing again in Kerala also. So we have done a lot of activities in Kerala and in Tamil Nadu. But mainly, I like to highlight one main activity that we did in Tamil Nadu, where actually around 50 ATM of ours was about to be closed by the collector of a particular district, saying that not only us, even the other MSP vendors ATMs was about to be closed by the collector, saying that it's not hygienic, people are not following social distancing and other issues. So what we did is that we personally I myself personally contacted the collector. Yeah, obviously took the number from my team members, got a couple of help from the others. Personally contacted the collector of the district, spoke to him over phone personally, and I requested him that whatever his requirements are there, or whatever as per government norms are there, that we will follow it, and we'll ensure that those ATMs are maintained in that way until this COVID issue is reduced. So after a lot of coercing, talking to the collector a couple of times, and then he agreed to saying that they put us a rule of around 10 numbers, stating that these are the things which you need to follow if you need to have your open ATM running. And so based on that, we followed up. We took manpower. Collector wanted a caretaker to be in the site. We took manpower for those sites. We ensured those sites are cleaned every day, and we regularly, our team members, Mr. Gopi and Mr. Abraham, all of them are in regular touch with those caretakers to ensure that their attendants are there in the sites. So based on this regular activity which we did, actually initially our transactions dipped very badly because of this shutter up and down that we had to do during this period. And then because once the caretaker came, the transactions went up very high, and it reached around 170 plus at a particular point of time. So we are doing really good at that time, and then now it is also currently going on that way. And now we have convinced the bank that as of now there is no requirement for the caretaker also, and we are in the process of removing those caretakers, because people are now happy that those machines were kept clean, and because of that, corona has not spread because of our ATMs. So even the other MSPs also called us and thanked us because we took this initiative to open our ATMs. So it is a overall that we did for everybody together. So that helped us a lot. And for Kerala, there was a lot of issues like this which we faced with support of Mr. Vipin, Mr. John, who are my main pillars of Kerala. I can say. Where they had done a lot of contribution towards because language is a constraint for me regarding Kerala. So they had taken the initiative to talk to the authorities to ensure those things are taken care of. So we did a lot of things during this time, which I cannot go point by point, which would take a lot of time for me to explain. So these are things which helped us to maintain the amount of transactions just like before COVID days. So as of now also we are almost above those COVID days, before COVID days transactions. So we're doing really good. Thanks to my team members, Mr. Gopi, Abraham in Tamil Nadu, and Mr. Vipin and John in Kerala. Other team members are also there. They've also done their duty really well. Excellent. So my question is that you're Srinath, right? Yes. Yes, sir. Two things happen in a COVID time. One is the hygiene and one is social distancing. Yes, right. Two very, very important aspects to that we
we don't kind of break the spread of virus. How did you manage that in a distant places like Tamil Nadu and Kerala? Sir, by putting these caretakers in a mostly in the important areas, we ensure that the caretakers kept the sites clean, as well as ensure that the sanitizers are available, ensure that the public who come in queue, mainly during the first to the second week of the month, to ensure that they maintain social distancing, the queues are maintained, and police come and check with them every now and then that whether they are available or not. And even in Kerala also, we are regularly in touch with the authorities. We kept ensuring that our housekeeping agencies were regularly contacted to ensure that the cleaning is done regularly. So these are the things that we did. And also sanitizers, we ensured our people personally bought sanitizers from their pocket money, went and kept the sanitizers in those places. And even there are instances where my team members have gone personally to the sites and swept those places, because the housekeeping people are not able to go to those sites because of the lockdown issues and other things. So these are the things that we did to ensure that to maintain social distancing and also cleanliness of the site, which obviously helped us in increasing the transaction in those sites. People were confident if we go to that site, we will not be affected of corona. Excellent. I think that's great that doing things without waiting for instructions and approvals, you have gone ahead and excellent. Charin, is there anything, Srinath, is there anything else that you want to share? Nothing else, sir. I would like team, to say, I would like appreciate that. Yeah, I would like to say a very big thank you to Vishal and to ND sir also, and to the whole of the management for giving us the kind of support they have given us, without which it would have been very difficult. And also a big thanks to HR team also. They've been continuously in touch with us also regarding how is our health, how is our family, and all these things. Thanks to all of them. Without this wouldn't be possible. It's all a team effort that we have done. That's about it, sir. Excellent. Earlier COVID warriors also said a lot about it and talked about HR also. Seconding that again, that there's a lot of help that you all have got from ND and HR, which is good to know. Yes, so good. So if there is, hang on. We will let me get another member, another introduction. But before that, participants in the show, if you have anything to say, you want to ask, you can do that. You can use the Q&A box, or you want to ask directly, you can do that also by raising your hand, and somebody will get it across. This is an opportunity to recognize some of your staff members who have done good work for you and good work for the company, and thereby you're propagating that hey, we are there, we are still despite the difficulties that we all encounter, we ensure that the brand value of EPS does not get mitigated. The brand value remains high. In fact, if you do such things, the brand value actually increases from what it was. So EPS will earn a much bigger name if you with what you have done, Srinath. So good to hear that. Participants, look forward to your testimonials, observations, questions, whatever, recognitions, whatever you want to do. This is your opportunity. Go ahead and do it. May I request, Vilas Chavan to introduce Mahesh Gandhi? Yeah, sure. Go ahead. My voice is audible? Yes, it is. Yeah, okay. Thanks, K. Okay. So, from basically my team, there are so many team members, okay, and from their ground level, they are doing something from the people who is actually needed in this situation, okay. So, the Mahesh Gandhi is a good team member, and basically he is doing a good work. And in the COVID situation, see, this is we are doing in the corporate, okay. Apart from the office work, we are doing something from in the social
activities, correct? Mhm. Why I choose the name and our team choose the name Mahesh Gandhe? There is a one incident. There is a one heart-touching incident. One of the Mhm. 65, 70 age, okay, somebody, he COVID positive, and their relatives not accepting their bodies. Okay. So Mahesh Gandhe and his friend, he took the body from the hospital and वो अंतिम संस्कार करते हैं ना, वो सब उन्होंने किया. Okay. Correct. Okay. Arey, So fantastic. apart from the our office activities, we need to concentrate on the Yeah. social activities also. See, I salute the both of them who is Yes. doing the ground level. हम लोग क्या कर रहे हैं? घर पे बैठे पे सिर्फ हम लोग टॉक दे रहे, right? Yeah. बट जो एक्चुअली जाके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, दैट इज अ सल्यूट ऑफ. Yeah. एंड दैट श्रीनाथ, आई सल्यूट टू यू आल्सो एंड योर टीम मेंबर आल्सो हु इज डूइंग द ग्रेटफुल जॉब इन दिस सिचुएशन. ओके. सो मेरे टीम मेंबर्स में बहुत सारे जन हैं कि जिन्होंने ये सोशल एक्टिविटीज में बहुत कुछ किया है. अदर अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी का काम क्या है? घर पे बैठ के वीपीएन लो और इश्यू सॉल्व करो, राइट? उनको तो ग्राउंड लेवल में जाना नहीं है, करेक्ट? Yeah. बट व्हाट इज द ग्राउंड लेवल जो एक्चुअली Correct. ट्रैवल कर रहा है डे टू डे, या फिर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनका हेल्प कर रहा है वो, करेक्ट? दैट इज एक्चुअली कोविड वॉरियर्स. Yeah. Yeah. Yeah, and I salute to them. Okay, so Very good. Excellent. yes, so let me introduce the Mahesh Gandhe. Mahesh Gandhe उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर Yes. करेगा जो भी है. Yeah. Yeah, Mahesh Thank you, Vilas. please Thank you, continue. everyone. Yeah, Thank you, Vilas, and everyone, to give me the opportunity to share my experiences with you all. First of all, good afternoon to all. Hope you are well and doing good to your life. Actually, sir, मैं हिंदी में बात करना प्रेफर करना चाहूँगा. If you all, Bindas. yeah, thank you. हिंदी So, में बोलो. so actually, sir, मैं एक रूरल सेक्टर से, रूरल एरिया से बिलोंग्स करता हूँ, जहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम या फिर ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंच पाती है वहां पे. तो ऐसे रूरल सेक्टर में मैं कहाँ पे? रहता हूँ. खरड़ी इज कसार, नियर टू कसारा. होप यू नो अबाउट इट. Near to Kasara. Uh, Okay. Correct. yeah. Okay. सो एक्चुअली सर, जैसे विलास ने बताया कि एक जो पर्सन थे उनका एज अराउंड 60, अबाउट 60 था, 65. सो उनको ही वाज अ कोविड पॉजिटिव, एंड जो थे, मतलब उनका बेटा मेरा दोस्त था अच्छे से, और वो यहाँ पे नहीं है. ही इज इन यूएई नाउ. तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब कोई जो रिलेटिव्स थे वो कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे थे वो बॉडी का. और जो बंदा था वो तो, उनका जो बेटा था वो ऑलरेडी यूएई में फंस गया था, आ नहीं पा रहा था यहाँ पे. तो मेरे कुछ दोस्त है जो 6 to 7% हम लोग हैं जो थोड़ा सोशल एक्टिविटीज करते हैं. सो वही कारण हम लोग ने, with the all permissions, with the all precautions, we took the body and we done with the funeral activity totally. So that was actually the bad experience कि जब भी आदमी का लाइफ खत्म हो जाता है तभी अपने भी नहीं आते हैं सामने, एक बैड सिचुएशन की वजह से. Very sad. सो उसके वजह से मेरे जो दोस्त थे, हम एक 5-6 जन मिलके हम लोग का एक फर्म है छोटा सा, जहाँ की हम लोग एक सोशल एक्टिविटीज करते हैं. सो लाइक इससे भी और 2-3 एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. First of all, I really thank you to my team members, all team members who support me to doing this while in this lockdown period. And scene was like, sir, मेरा जो भी काम था मैं मॉर्निंग के आवर्स में करता था, और जो भी ऑफिस वर्क था वो रात के टाइम पे, जो भी पेंडिंग्स था जो वो रात के टाइम पे मैं खत्म करता था.
सर यहाँ पे ना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब भी लॉकडाउन 1-2 लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे, तभी जो जिन लोग के पास कुछ काम नहीं है वो सब ऑलमोस्ट घर जा रहे थे, मतलब हाईवे से जो रोड पकड़ के सीधा घर जा रहे थे, पेडेस्ट्रियन लाइक यू कैन से। उनके लिए कुछ फैसिलिटीज भी नहीं था, तो मी एंड माय फ्रेंड्स हम लोग ने डेली बेसिस पे 150 to 200 पर्सन का खाना बना के हम लोग हर रोज हाईवे पे खड़े रह के उन लोग को खाना प्रोवाइड करते थे, जो भी सर्व कर पाते थे हम लोग। सर ऐसे ऐसे जो हम लोग ने देखे, जिन लोग के पास पानी नहीं था पीने के लिए, कुछ लोगों के पास, कुछ बच्चों के पास पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं था, वैसे लोग अराउंड मतलब मुंबई से निकल के उनके होम टाउन, उनके लिए बहुत कुछ करना था। सो वो टाइम पे हम लोग ने थोड़ा सोशल एक्टिविटीज स्टार्ट किया था। मैं और मेरे 5-6 जो फ्रेंड्स है, एक छोटा सा सोशल फर्म चलाते हैं हम लोग, तो कंट्रीब्यूशंस करके हम लोग ने वो किया था। सो और दूसरा एक एक्सपीरियंस सर है जो कि मेरे घर के बाजू में है, जो कि एक स्टेट एजेंट है, जो बड़े हैं, मतलब उनके लिए भी अभी ये लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद उनके वो सब मुंबई से आते थे, तो उनके लिए वो मतलब उनके लिए सिम्टम्स हो गया, उनको कोविड पॉजिटिव भी हो गया। सो उसके बाद भी हम लोगों ने फिर ग्राम पंचायत उनको उसको टोटली हम लोग ने सैनिटाइज की। जब भी ये जो एक्चुअल कोविड वॉरियर्स है, जो कि डॉक्टर्स है, पुलिसमैन और जो भी मतलब उनके जिनके घर पे उनके मतलब आते थे भी, उनके लिए कुछ ग्रोसरीज नहीं होता है, सो वी प्रोवाइड देम विद ग्रोसरी, मास्क, देन हैंड ग्लव्स। हम लोग वो एक्चुअल टाइम पे जब भी उन लोग को जो नीडी थे उन लोग को वो हम प्रोवाइड करते थे। उसके वो मुझे इसीलिए चुनना है मेरे उसकी वो तेरे काम को लेके लिया। So that was that was my really bad experience at the age of 28 sir. I'm very grateful कि एक अच्छा लाइफ मिला है और वो अच्छा से कर पा रहा हूँ। So yeah sir, this is my the whole experiences. Thank you. Thank you, Mahesh, for sharing your experience. And you mentioned that, yeah. Hello, KK. One more guys, I'm from my team. Okay. Yeah, go ahead. If you allow, I can introduce them also. He's having the one trust. Okay, and he's doing the. One minute, Vilas, एक second. हाँ. एक मिनट मेरे पास 5 नाम आए हैं from HR. So let me first stick to that. Okay, sure. Before you add any more. Yeah. So okay, we will look at how you can add the next warrior. So let's because we have to take care of time also out here. Okay. What I want to tell Mahesh is that Mahesh, you said that आपने बताया कि एक्चुअल कोविड वॉरियर्स है, जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, और बोले उनके लिए मैं मेरे मुताबिक आप भी तो एक्चुअल वॉरियर हो। ऐसे कुछ नहीं है कि खाली डॉक्टर ही वॉरियर है, आप भी वॉरियर है। आपने तो बहुत कुछ किया है, went into the front, you helped. I mean, help means he was already dead, but yet you did what is required to be done from our culture of giving him a proper funeral rite and getting so that his soul passes off peacefully, as we say in our Hindu mythology. So वो आपने किया, आपने तो बड़ा पुण्य किया है. You are actually to be a biggest COVID warrior than even a doctor. Doctors do his job. You have done beyond what you are supposed to do, right? The police and doctors are doing
what they are supposed to do. You are not supposed to have taken care of your friend's father, but आपने वो भी किया, which is to me a great thing you have done, and I kind of salute you for that. So you are a warrior in me, according to me. So like I said, ladies and gentlemen, if you have anything to talk, to give testimonials or to observe, this is your opportunity. आपको अगर कुछ कहना है, हिंदी में कह दीजिए, मराठी में कह दीजिए, कोई बात नहीं, या any language that you know, you're most welcome. आप express कीजिए आप. This is your platform to express yourself. I have one testimonial or a question actually from Ashish Parmar to Srinath. So can we bring Srinath on the screen, please? So the question is, Srinath, from Ashish Parmar, he's asking you the question. My question to you is that, is there any member was there who found with COVID positive by doing such kind of task? यानी आपने जो काम किया उसके बाद ऐसा कोई हुआ क्या कि जो कोविड पॉजिटिव हो गया, और क्या प्रिकॉशन आपने लिया है that personally, so that nobody of your team gets into a COVID positive situation? This is a question to Srinath. Yes, sir. Thank you so much, Ashish. Thank you so much, sir. Sir, my team members, when they go to field, I ensure that they purchase this PPE kit and also mask and gloves. Where initially in those days it was pretty difficult to get those PPE kits, but and they had money constraints also, where I have purchased it and given it to them to ensure their safety, and also to they have also purchased, they have also ensured, they have taken vendors to our ATM sites. They have purchased PPE kit and mask and gloves for the vendors also to ensure their safety also. So these are the things that we did to ensure our team members or our vendors don't get affected with COVID. So what's that the question? That's great. That's great that you have. Yeah. So I think the question also was, was there anybody who had a COVID positive case? No, sir. Not in Kerala, and not in Kerala and Tamil Nadu. Specifically, sir, not on with the field. Caution. Yeah. So from our end, from the management end, we are very clear, sir. Yeah, work is important, but health is more important. So people have to travel with the full precaution. We are not forcing any people to go out and take any kind of risk. So this is the clear-cut communication message from the management team and from our end, and people are taking the needful precaution to stay safe. Yes, absolutely. I think most of your team members are all outside Bombay and on the field. So it is absolutely important for you all to take KK, my one question. KK, my one question. Yes. Who were going to field to perform this activity? Right. Okay. So EPS giving provided some means for the PPE kit. In the hospital there are so many charges for the PPE kit. So EPS providing that charges for the purchase the PPE kit. That is a reimburse. You're asking a question. Reimburse. So okay, I think you should take. I think you should take this offline. Talk to HR. Talk to your ND, and I'm sure they will take care of it. I mean, this is not a forum. Yeah, because when we are announcing that is a COVID warrior, right? So that is a safety is our safety, right? Yes. So we are taking I fully agree. I appreciate the question. Yeah. So I agree. I fully agree with you. It's a fantastic question that you're putting through, and but do take it up. I think Cherian and others, please take this up matter, and I'm sure HR is listening to this webinar, and they will also take it up with the management, because it has to be, any expense has to be approved by the management and the finance team. So so let's do that. So let's call the finance team now. It's a good question. Correct. There is before I call the finance team, not to answer that question,
I would ask, Andy would like to say something. Yeah, So, Andy, Urvi can is you there, please no, on unmute call. and- She's from the team, right? No, just 1 minute, 1 minute, 1 minute, please. Andy, would you like to say something? Yeah, so let me answer Vilas. Vilas, we do reimburse people who are taking, whether it is gloves, mask, travel, PPE kit, sanitizers, or whatever it is, right? That is Oh, sir. absolutely clear to everyone. Oh, sir. Okay, Great, that's great. sir. Thank you. Thank you, Andy, for your intervention and clarifying. Great. So that's on the spot. You have done it. Fantastic. Now I request Urvi Ambala to introduce Manish Sarnobat. Yeah, good afternoon, everybody. So I would like to introduce our COVID warrior from the FNA team, Manish Sarnobat. He was joined EPS as a take care of the fixed asset accounting and was very critical to our entire audit, and he taken up very well. Then in this pandemic time also, there was challenge came suddenly that one of our our team colleague has left the organization, and Manish has voluntarily took up that work and his profile, and he is doing really very nicely. So I really appreciate his attitude. There's never say no. So let's hear from him, Manish Sarnobat. Yeah, Yes, good afternoon, Manish everyone. Sarnobat. Hi, Manish. Yes, Hi. yes, sir. Yeah, good afternoon, sir. Yeah. First of all, thanks to my entire accounts team, Urvi ma'am, Sudhanshu sir, and Krupa ma'am. Actually, Yeah. that was their support due to which I was able to fulfill this responsibility. Actually, as Urvi ma'am said, I was actually looking after fixed assets when I joined here. So that was one of the core profile. And during this pandemic times, one of our colleague actually left the office, and he was looking after taxation, which is again a critical area. So I took up the responsibility because actually taxation, I'm more interested in taxation field also. So I took up that field and tried to provide as much as support I can. And rest all is happening now. Now everything is back on track, actually, we can say. Excellent, excellent. So let me add a bit of information to ladies and gentlemen who are not in accounts. Accounts, this pandemic happened in almost the middle of March. Yeah. End of March is our year ending. Okay. And by then COVID is like hit everybody. So offices are closed, people are not going anywhere. And this is something that the finance team has never encountered. Most of the departments are not encountered. However, their challenge is also to produce the results. There is no delay. There cannot be a delay in that. They have to produce the results. They have to get the things audited, which means audit has to come. Audit cannot come to office, but still you have to get it audited. Your books, your vouchers, and all. And this was the first time that auditors had to do audit virtually. That is, from their own office, they had to audit, like EPS from their office. How do you do that? Because they are all used to coming and ticking vouchers in the office, right? Suddenly, they said, no, you can't do that. So how do you do that? It's a challenge. And I think, the finance, whatever, how it is less, if you were to say that whatever appreciation we have to give for finance will be far less, because this is very challenging to get your things audited, bring your results, pay your taxes on time, and be abiding. And you are responsible for the board of directors. The directors board meeting comes. You have to produce the results. You cannot say because of COVID I have not got my results. That's not an answer. So I think to that extent, it's a great feeling. Go ahead. Is there anything that any incident that you would like to talk about, which is foremost in your mind? हाँ, वैसा एक हुआ था एक्चुअली. ये वैसे भी देखा जाए तो टफेस्ट ऑडिट था हमारे लिए. तो यानी मेरे करियर में तो पहली बार हुआ है कि घर पे बैठ के हमने ऑडिट किया हो. तो दिस इज नॉट द नॉर्मल सिनेरियो. और एक ही ऐसा इंस्टेंस हुआ था, जैसे नॉर्मली कोई छोड़ के जाता है तो एक हैंड ओवर एक प्रोसीजर रहता है नॉर्मली हमारे यहाँ पे. तो वो उसके लिए मुझे खाली एक बार घर से बाहर जाना पड़ा, दैट टू इन मंथ ऑफ अप्रैल आई थिंक, व्हेन पैंडेमिक वाज ऑन इट्स पीक एक्चुअली. सो वो एक इंस्टेंस था कि हमें लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस लेके वहाँ तक जाना पड़ा. डोंबिवली जैसे मेरा कलीग रहता है वहाँ पे,
तो उनके घर पे जाके एक दिन वो भी यहाँ पे आया था हमारे यहाँ पे, तो वो खाली एक दो बार इंस्टेंसेस हुए थे, बाकी तो नॉर्मली हमने घर से ही काफी सारा कवर कर लिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई ज़्यादा। Excellent. Very good work. I think appreciate. I think the whole of EPS and particularly the management appreciates आपने जो भी किया है. It's great, commendable. I have an audio coming to, I don't know to whom, but audio. Gopi Suresh Kumar would want to say something. Gopi, can you please unmute and ask? Gopi? Okay, he has some difficulty, I guess. Digital team, can you please ping him and figure out what is, so that, meanwhile, let's go ahead. We will talk to now to Vishal Krishna will now introduce Sai Krishna. Wow, Vishal Krishna will introduce Sai Krishna. Okay, Krishna, please go ahead. Yes, sir. तो साई कृष्णा हमारे हैं जो कर्नाटका मैनेज करते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं, पता नहीं चलेगा, लेकिन काम जबरदस्त करते हैं सर। आप उनको कभी भी फोन करो, साई कहाँ हैं आप? सर मैं तो चिकमंगलूर आया था। कैसे आए हो साई? सर रात पे चला, सुबह पहुंच गया। क्यों भाई? वीसेट खराब हो गया था, वो इंजीनियर को बिठा करके लाना था, मशीन मेरा डाउन था। तो बेसिकली ही इज अ सेल्फ ड्रिवन पर्सन और आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा रिस्क ले लेते हैं और अच्छा डिसीजन स्पॉट पे ले लेते हैं। ओवरऑल इंटेंशन ये होता है कि कस्टमर सर्व होने चाहिए, उसके लिए हम चाहे कुछ भी करें। तो आई कैन से थैंक्स टू साई एंड हिज टीम टू डूइंग वंडरफुल जॉब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। प्लीज साई, ओवर टू यू। ओके साई, क्या बात है। आप रहते कहाँ हैं? वेयर इज योर लोकेशन? सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा लोकेशन है शिवमोगा, कर्नाटका में है। और शिवमोगा? हाँ, शिवमोगा में। और आप चिकमंगलूर चले गए चल के? हाँ सर, चलते नहीं है सर, ड्राइव करके। ओके, ड्राइव करके। एक्सेलेंट। या फिर भी आप खुद निकल गए एंड दिस थिंग। ऐसा कुछ हुआ? यू हैव एनी इंसिडेंट और एनी वाकया जो यू वांट टू शेयर विद योर colleagues who are listening to you? Yes sir, yes sir. सर ये जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया ये सभी जगह, हम लोगों का मेन पिक्चर में क्या था, हम लोगों को एटीएम अप रखना है। एटीएम अप रखे तो कस्टमर आएगा तो ट्रांजैक्शन होगा। हमारा मेन वही एम था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत जगह जैसे यूपीएस डाउन था, एटीएम डाउन था, उस जगह सभी जगह को मेरा चैनल मैनेजर जैसे गौतम है, दर्शन, महेश, श्रीमंत, सहीनंद, हम लोग 7 मेंबर का टीम है कर्नाटका में। हम लोग क्या कर रहे थे, इधर भी वो पैंडेमिक सिचुएशन में कोई इंजीनियर नहीं आ रहा था और रिसर्च इंजीनियर भी नहीं आ रहा था, घर से ही निकल रहा था क्योंकि मेजर ट्रांसपोर्ट नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, जिधर भी डाउन एटीएम रहेगा, जिधर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगा, रिसर्च इंजीनियर की जरूरत पड़ेगा, 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम लोगों ने इंजीनियर को बाइक पे बिठा के ले जाके एटीएम को सभी एटीएम को अप करवाया और ट्रांजैक्शनल करवाया। ये मेजर अचीवमेंट मेरा टीम ने किया। हर एक टीम का मेरा मेंबर वॉरियर है सर इसके साथ में। एक्सेलेंट, वेरी गुड। सुन के खुशी हुई साई कृष्णा, ये आपने इससे डेडिकेटेड काम किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर testimonial or questions or observations or anything that you want to say or you want to say or ask any of our members. So far we have covered Srinath, we covered Sai Krishna, we covered Mahesh Gandhe, and we covered Manish Sarnobat from finance. So if you have anything to tell them, do that. You want to give them even a flower or something, just draw something and send it to the Q&A box, or just say flowers, or plant, whatever you want to do. It's your opportunity to appreciate. KK Vilas here. I think for this warrior, we need to stand up and give them salute. Yes, absolutely. So we'll do that. We'll do at the end of this thing. I have one more person to bring in. Yeah. So
Gopi Suresh Kumar, are you in a position to ask you want to unmute and ask? Okay. Sorry, you're not able to, is having a network problem perhaps. So let me get the last warrior introduced by Rohit Jain. Rohit Jain will introduce Dinesh Retrekar. Good afternoon, everyone. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon. So I would take it in Hindi today because we are from now Madhya Pradesh. I'm going to Madhya Pradesh now, introducing Mr. Dinesh Retrekar, taking them in Hindi. तो हम लोग दिनेश भाई के नाम से जानते हैं उनको, तो दिनेश भाई ही बुलाते हैं हम. और वो जो काम करते हैं उनका काम के मामले में वो ऑलराउंडर कहे जाते हैं. मतलब चाहे वो वेंडर के साथ काम करवाना हो, बैंक ऑफिशियल्स के साथ रिलेशनशिप हो, फ्रेंचाइजीज के साथ हो, कहीं पे भी हो, उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑलराउंडर की तरह ही है. तो एक ऑलराउंडर की तरह उभरे हुए खिलाड़ी समझे जाएंगे हमारे टीम के. मध्य प्रदेश पूरा अकेला, जो बड़ी ज्योग्राफी है भारत में, वो अकेले देखते हैं. उनके साथ एक ही सिर्फ उनका सपोर्टिंग वॉरियर है. उनके साथ 2 ही जन मिलके पूरा ज्योग्राफी मैनेज कर रहे हैं. परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और उनकी पर्सनल हॉबीज भी बताऊंगा कि उनको कुछ गाने का शौक है और ढोलक बजाने का भी शौक है कुछ. तो लेट्स हियर फ्रॉम दिनेश रेत्रेकर फ्रॉम मध्य प्रदेश. Come on, Dinesh. नमस्ते सर. नमस्ते. 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 सभी को नमस्ते. हाँ, तो थैंक यू सो मच. नमस्ते. कहिए, आपने कोविड के टाइम पे आपने बहुत कुछ किया है, इसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया है. क्या आप एक दो वाकया जो कुछ हुआ, घटना हुई है, क्या आप शेयर करना चाहते हो? सर एक्चुअली मैं इसमें बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग जो हमारा मार्च में कोविड आया, उसके बाद में बहुत सारा लोकेशंस पे हमारा ट्रबल ये हो गया कि लोडिंग करने के लिए CRAs नहीं जा रहे हैं, बिकॉज प्रिकॉशंस के लिए उनको कुछ आइडिया नहीं है करना क्या है. शुरुआत में यही पता नहीं है किसी को. तो सर उस कंडीशन में हमारे लिए भी बहुत कुछ धीरे धीरे था. हमको भी लग रहा था कि हम इसमें कैसे उभरेंगे, हमको भी पता नहीं था फील्ड में. बट एक बहुत अच्छी बात हमारे EPS में है, क्योंकि जो मेरे सुपीरियर है उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला जो अभी भी याद है. लास्ट 3 years बैक बोला था उन्होंने, 2 साल पहले बोला था कि भाई यू आर द किंग फॉर योर स्टेट. उन्होंने एक वाक्य जो बोला वो आज भी जहन में है. विशाल सर को बोलूंगा मैं कि उन्होंने ये वो हमेशा एक वर्ड बोलते हैं कि भाई आपके स्टेट के आप राजा हो. अभी आपको आपके स्टेट में कैसे परफॉर्म करना है आप करो, करके दिखाओ. और वो चीज हम लोग करने के लिए पूरे प्रयास रखते हैं. मार्च में यही हुआ. मार्च में जैसे ही कोविड शुरू हुआ, सब लोगों को टेंशन हुआ, अप टाइम हमारा डाउन हुआ, लोग जा नहीं रहे थे कॉल अटेंड करने के लिए, कैश लोडिंग नहीं हो रहा था, कस्टमर ATM पे नहीं आ रहे थे, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा था. तो एक बोल सकते हैं कि फ्रूटफुल काम करने के लिए और हमको वापस ट्रैक पे आने के लिए जो काम करना चाहिए था वो हमने किया. लाइक जो गोले बनाने होते हैं ATMs के ऊपर, पहले कस्टमर को अपने ATMs के ऊपर अट्रैक्ट करना, पहली चीज. दूसरी बात हाइजीन रखना, यानी कि उसको हाउसकीपिंग करना. तो एक चीज मेजर समझ में आया सर इस कोविड के अंदर कि जो रिलेशनशिप है, आइदर इट इज विद कस्टमर, यानी कि हमारे जो SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर WLA फ्रेंचाइजी क्यों ना हो, या फिर हमारा हाउसकीपर हो, या फिर साइट का ऑनर क्यों ना हो, सबसे रिलेशन बना के जो हमने रखा है अभी तक, जो पिछले 8-10 सालों में, वो रिलेशन सर इस कोविड में हमें बहुत काम आया. वो कैसे काम आया कि अगर हमारा ATM डाउन होता है तो हमारे पास में 10 रिसोर्सेज है. अगर हम इमीडिएटली तो कोविड की तरफ से जा नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग थ्रू ऑनर की हेल्प से हमने अपने ATM चालू कराया. चाहे थ्रू हाउसकीपर हो, उसके थ्रू हमने ATM चालू कराया. वीडियो कॉल करके हम लोगों ने अपने ATM चालू कराए. तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये था कि हमारा अप टाइम जिसके लिए हम जाने जाते हैं EPS में, हमारा स्टेट जाना जाता है MP छत्तीसगढ़, उसको हमेशा हम टॉप पे रखें. तो आज तक सर हम लोगों ने वही मेंटेन किया और आज भी हम लोग 95% एवरेज अप टाइम मेंटेन करके आ रहे हैं और कर रहे हैं. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है सर. और उसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा मैनेजमेंट को. और एक पॉइंट और इसमें डालूंगा मैं कि मैं जिस कंपनी से आया वो थी CH. जब CH से EPS में आया तो EPS में आने के बाद में एक बहुत अच्छा शुरुआत में जब आ रहा था तब लग रहा था कि क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ EPS में जा रहे हैं, पूरा पता नहीं था.
लेकिन उधर से जब पुशअप किया गया कि भाई अभी प्रोजेक्ट ट्रांसफर हुआ है, आप जाइए, आपको परफॉर्म करना है, तो जितेंद्र चिवटे साहब सीएच में बोले कि भाई इधर काम करना है या उधर काम करना है, काम तो बराबर से करना है, परफॉर्मर तो आप हो, चाहे सीएच में थे चाहे ईपीएस में हो, परफॉर्म तो आपको करना है। तो ये हमने गार्ड बांध के रखा और ईपीएस में भी आज सेम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और कर रहे हैं जैसा हमने सोच के आए थे। दूसरा सबसे अच्छी बात सर ईपीएस के अंदर है फ्रीडम। आपको इतना फ्रीडम यहाँ पर दिया हुआ है कि आप आपका डिसीजन लोकल पे ले लीजिए। मैं लास्ट एक छोटा सा शेयर करूंगा। रांची में लास्ट टाइम हमारा मीट हुआ था, सभी स्टेट्स को बुलाया गया था वहां पे। तो एनडी सर वहां पर आए और जब उन्होंने हर एक बंदे से अपना कन्वर्सेशन किया, डिस्कशन किया, तो मुझे वो चीज बहुत मन में आज भी लगती है कि यस, कंपनी आपको फ्री हैंड तो दे रही है और आपसे एक्सपेक्ट भी करती है कि व्यवस्थित काम भी हो। और सेम वे में जब टू वे कम्युनिकेशन होता है और रिलेक्शन दिया जाता है कि हाँ आप फ्रीडम काम करो, तो रिजल्ट भी वैसे मिलते हैं। तो मुझे सर ऐसा लगता है कि हमारे एमपीसीजी में हमको उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिला। और एक पॉइंट और छोटा सा मन में है, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो ऑफिस से फोन आया मैनेजमेंट्स का। मीनाक्षी मैडम तो एवरी वीक हमसे फॉलोअप लेती हैं कि भाई कैसे हो, क्या हो, फैमिली कैसी है। हमारे मैनेजर जो सुपीरियर है वो भी लेते हैं। बट सडनली मेरे पास एक बार कॉल आया संजय कपूर सर का। मैं खुद शॉक रह गया, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ा सर। लेकिन जब उनका फोन आया तो मैं भी शॉक रह गया, क्योंकि एक कपूर जी जो है हमारे पड़ोसी भी हैं, तो हो सकता है मैंने कहा उनके पास कोई नंबर दूसरा हो तो उससे कुछ कॉल किया हो। बट उन्होंने जैसे ही बोला मैं संजय कपूर ईपीएस से बात कर रहा हूँ, तो मुझे सर उस दिन भर जो है बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि हमारा एम्प्लॉय कैसा है और उसका कितना वो क्या कर रहा है, उसकी फैमिली कैसी है। एंड दे आर आस्किंग एवरीवन एवरीथिंग कि भाई तुम क्या करते हो, क्या नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, पर्स या नंबर सेव कर लीजिए। तो सर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ईपीएस में है। मैं बोल सकता हूँ कि बहुत शानदार है इस मामले में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। So that's great. Good to know that key management has been followed. बात करना और शेयर करना तो बहुत जरूरी है. So good to know that. I have anything else you want to say, Dinesh, Rohit ji? Sir, one more thing, sir. I want to say related to one incident. जब भी हमारा एक वेंडर के साथ मीटिंग था, एक वाकया मैं शेयर करना चाहूंगा। एक वेंडर एसबीआई में हमारा मीटिंग था, एलएचओ में सारे अधिकारी बैठे हुए थे मीटिंग के अंदर, और दे आर क्वेश्चनिंग दैट विद अस कि आपका कौन सा मशीन किस कारण से डाउन है। मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल से ही उनको पूरा अपडेट दे दिया। तो मुझे पूछे मीटिंग के अंदर कि आप मोबाइल में देख के क्या बता रहे हो, आप कैसे बता रहे हो। तो मैं बोला उनको कि सर ये रियल टाइम पे मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, मेरा एटीएम कौन सा डाउन है और क्यों डाउन है, ये रीजन के साथ बता रहा हूँ। जब उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या टूल यूज कर रहे हो आप, तो मैंने उनको कहा कि सर मैं एचपी टूल यूज कर रहा हूँ, आपका एसबीआई का खुद का रियल टाइम वाला। तो वो बोले कि यार आपके पास में एचपी टूल मोबाइल में है, बाकी किसी वेंडर के पास में नहीं है, ऐसा क्यों। मैं बोला सर ये मुझे नहीं पता कि कैसे उनके पास में नहीं है, बट यस वी आर अप टाइम मेंटेनिंग विद दिस टूल। और अब सबसे अच्छी बात यह है सर कि हमारे पास में सिमिलर वे में उसी के थ्रू ईपी स्टार करके एक टूल मैनेजमेंट ने हमको दिया है, जो कि इतना बेनिफिशियल है कि हम कहीं भी जाते हैं तो चैनल मैनेजर को हम वो भी दिखाते हैं कि देखिए हम ये यूज करते हैं सर, इसलिए हम लोग टॉप पे हैं। सो सर दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, जो हम बता सके कि हम क्यों आगे हैं, हम क्यों परफॉर्मर हैं, उसका रीजन उनको जानना है, तो उसका हम आंसर दिए सर। एक्सीलेंट, थैंक यू। तो आप ये कैसे करते हैं, हाइजीन कैसे रखते हैं कि दूसरों को, आपके टीम मेंबर्स को कोविड या ऐसा कुछ ना हो? सर एक्चुअली अभी हम लोगों ने क्या किया है ऑलरेडी स्टार्टिंग से, जब भी हम लोग अभी साइट ऑडिट पे भी जाते हैं या कैश ऑडिट पे जा रहे हैं, तो हमने अपनी गाड़ी में, मेरे पास में स्टॉक करके रखा है, मैंने अपना मास्क स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बाद में एक शील्ड है सर जो आगे लगती है, वो शील्ड मैंने अपने पास परचेस करके रखी है एक्स्ट्रा में, कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर सीआरए को सबसे पहले वो पहनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, पहले उसको पहनाऊंगा, उसका वाला उतारवा लूंगा पुराना वाला कि आप पहले ये पहन लो नया वाला और इसी को यूज करो और मेरे साथ में ऑडिट करो। तो एक तो सबसे पहले वो चीज है सर। और जो क्रिटिकल साइट्स हैं जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट हमको मिले हैं पिछले दिनों में, तो हम वो साइट के ऊपर एवरी 7 डेज के अंदर सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं, आइदर थ्रू इट इज गवर्नमेंट, आइदर थ्रू इट्स आवर ओन वे। राइट,
Excellent. और ऑनर को हम लोग सर इसमें क्रॉस करके रख रहे हैं कि ऑनर भी इसको चेक करते रहे कि भाई अगर हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो इमीडिएटली हमको बताए तो हम लोग उस पर एक्शन ले सके। तो क्रॉस वेरीफाई पूरा कर रहे हैं सर। एक्सेलेंट, ठीक है। रोहित भाई आप जाइए ना, कुछ आपसे और एक रिक्वेस्ट करनी है। तो उसके पहले मैं some observations have come. Subhash Rajput for Manish Sarnobat. So for Manish Sarnobat, Subhash Rajput says, as a colleague, we are thankful to his great work, and so has come from Manish. Bhavani Shankar Bharati says, dear Sai Krishna from Bangalore. So Bhavani Shankar Bharati has praised Sai, saying that, dear Sai, kudos to you and your team, and you've been hindered by police and other authorities, and how you've been able to ease out the situation. So very good, Mr. Sai, that you have been able to tackle the police and other authorities who are maintaining complete lockdown. Despite that, you managed to keep your ATMs up. So that's great. So ladies and gentlemen, we are almost to the end of the show. If there is still somebody who wants to say something or write something, observe something, you have another almost 5 minutes left. You could do that. Meanwhile, sorry. So meanwhile, let me reiterate who all we. Yes, go ahead. Yeah, this is Vilas here. One more person is joined on Vilas. this call. This is the Arshad, okay, and he's doing a full social activities. Okay, he's having the one trust. Okay, if you allow me, I will ask to join. He's said some words and no, we have many other time. Okay. No, one sec. We have a set program. We have other days also. Let the rest people who are creating all this, let them do that. So let's not jump the gun. I'm sure many people have anything. So Dinesh Ritekar is a good singer. Oh, is it? Dinesh Ritekar from Indore is a good singer. Let's request him to play an instrument. Ritesh, can you do that? Dinesh Ritekar, can you play a good instrument? Sir, actually not possible He's a good right singer. now. Okay, can you sing? Because even Rohit Bhai is also going to sing. Yeah, sir, no problem. 2 line में बोलता हूँ sir. So first, yeah. So Dinesh गाइए आप, please. ओ प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया, ओ प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया, तू खुश रहे जहां भी रहे ये मेरे दिल की दुआ हो, ओ प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया। थैंक यू सो मच। और प्रिया कौन है भाई? सर इट इज माय वाइफ। Rohit bhai? That's all. Yes, you're playing safe, man. That's great. You're playing very safe. Very good. Excellent. This is another quality of EPS, you know? Play safe. Good. So we are coming to the end of today's. I think Rohit bhai, you also would like to sing? No. I am not at all a singer. I heard that you can also sing. No, sir. No, possibly. Okay, doesn't matter. सबका परफॉर्मेंस कम है तो रोहित गाना गाता है सर। अच्छा. Great. So any of you want to say something else? Srinath, Sai Krishna, Dinesh, Mahesh and Manish Sarnobat. Any of you all want to say anything? This is your chance. Just a big thank you to everybody, management, ND sir, HR in specific, and to Rohit, everybody. We can name a lot of people. So very, very happy to be working along with them, sir.
सर मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा विशाल सर को, एनडी सर को, जेसी सर को, रोहित सर, आदित्य सर, सबको थैंक यू, क्योंकि बिना टीम के सर हम लोग कुछ भी नहीं है। टीम सपोर्ट कोऑर्डिनेशन के बिना हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। पिक्चर को, स्पेशली आईएम टीम को, जो अपने कंधे से कंधा मिला के अपना जो भी ये टीम डाउन जाता है रेस्पॉन्स देते हैं, इसलिए हम लोग बहुत धन्यवाद थैंक्स बोलते हैं। Thank you, thank you. Any participants? Any participants? Would you want to say something? Okay, so you can still say that. So participants, we have started a small poll today. There's a poll going on right now. You can see on your screen, poll in progress. Please participate and share your response. So far, we have received amazing responses, and urging those who are yet to give their response, please give your response to the poll that is in front of your screen, because that will enable the digital team, which is working so hard every day, right from Monday to Saturday, to bring you good shows. Okay, and thanks to them that today we all are connected through this online session, and we are able to talk to each other, at least see each other and hear others and thank others. So that's the team, the digital team which is behind all this. So they would like to make their session, this online show, much better than what it is. They are seeking some response from you. So don't fail to give your response and help them out. So I also would want to tell you that, as you know, we are running this from Monday to Friday, a business and banking dialogue show. You are participating. Many of your colleagues, your friends also may be participating. Please note that from the 1st of September, we are changing the time from 3 o'clock. Like today we had 3 o'clock. We are changing it to 6 o'clock in the evening. The reason is that the lockdown in many states has started coming down, has started reducing. Restrictions have gone. Offices are beginning to start working, 30%, 40%, 50%, whatever it is. People are started working. Shops are open. Malls are opening or have already opened. So, all around things are coming back to normal. Slowly they're coming. And, within a few days, I'm sure everything will be normal. So in order that they are able to catch up on our shows, we have changed the time. So it's now going to be 6 o'clock, 6 to 7 every day, Monday to Friday. Saturday, this is a hard talk. Also, we will make it 6, but we will let you know in case there is a change to that. So this, I want to thank you all. Thanks specifically the COVID warriors. We recognized 5 of them today for doing a fantastic job. Continue to do the job, but of course, take care. You have to take care of yourself first, and there cannot be a compromise on your health. So ensure that you are healthy so that you can help others. With these words, I want to thank you all and wish you goodbye and good luck, and wish you a good evening for the rest of the day. Thank you. Bye-bye. Yeah, thank you. Thank you. सर एक चीज बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे सभी को बोलना चाहूंगा मनीष सर बोलते हैं सबको वर्क इज इम्पोर्टेंट बट हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट थैंक यू Yes, correct. थैंक यू सर नमस्ते सर Okay. Thank you. Okay. Thank you, KK. Thanks. Thank you. Digital team, please take over. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ